most sincere learning destination, also providing classes from 1st to 10th. Okay, so this is going to be the session number 2 of statistics. Clear? Okay, as we already know that कि हमने कल इसका session number 1 start किया था, right? So today we will be continuing the same with the session number 2. Okay, till then who all are online, just drop me a message. कैसे हैं मैम? Hello मैम, good evening मैम, होली की तैयारी कैसे चल रही है बता दीजिए, ठीक है? Okay, and till then मैं बता देती हूँ कि what is Swiflearn all about. Swiflearn is basically an online platform which is providing live and interactive classes. Yes, the very first thing comes here is that it is providing 100% live and interactive classes. Okay, live means as you can see me live here, मुझे भी आप live देख रहे हैं और वहां पर भी in our classes आप live आ सकते हैं हमारे साथ with a face to face. Okay, and that class are interactive also, as we can say that we will clear your doubts. तो आपको जो भी कुछ पूछना होता है, as it is limited in YouTube because आपको chat में करना पड़ता है, but there you can talk to us with face to face. After that we have personalized attention batch with maximum 6 students. Clear? 6 students होते हैं because of that कि chaos नहीं होना चाहिए क्लास में, ठीक है? और अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप 1:1 और 1:2 वाला बैच भी ले सकते हैं। भाई ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर क्लास ही हो जाएगी, तो बेटर क्लास में ही समझ में आ जाएगा, तो स्विफ्टलर्न जैसे प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है? यस, अच्छी जरूरत भी है, बट वी कैन से दैट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी मेक श्योर दैट देयर आर ओनली 6 स्टूडेंट्स. After that, a academic mentor team to track and work on the students' progress. There are two important things. The number one is track and other is progress. ठीक है, तो जहां पे आप लैग कर रहे हैं वहां पे हम आपको ट्रैक करेंगे और आपकी प्रोग्रेस कराएंगे. सो लैग, ट्रैक एंड प्रोग्रेस all are moving all around. Clear? After that we cover syllabus. So when I talk about the syllabus, CBSE, ICSE and what? CBSE है, ICSE है और आपका स्टेट बोर्ड है, हर तरीके के सिलेबस यहाँ पे कवर अप करवाए जाते हैं. Clear? And we handle custom request also. अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पहले पढ़ना है तो इस तरीके की रिक्वेस्ट भी यहाँ पे हैंडल करी जाती है. ओके, क्लियर? आफ्टर दैट लेट्स सी सम मोर की फीचर्स. अ डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट इज हियर. यस, अ डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट. हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? पीटीएम में डिस्कस करते हैं. सो यस, वी हैव पीटीएम्स हियर आल्सो. पेरेंट टीचर मीटिंग भी यहाँ पे टाइम टू टाइम कंडक्ट कराई जाती है, जहाँ पे आपकी ग्रोथ को बताया जाता है कि आपने हमारे साथ पढ़कर कितनी ग्रोथ करी है. ओके, आफ्टर दैट यू कैन टेक अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. यस बच्चों, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और हर होमवर्क सेशन यहाँ पे दिया जाता है आफ्टर एवरी सेशन. तो सेशन के लिए सेशन में भी आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट हो गए और बेसिकली मंथली भी यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं. उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं, करते करते थक जाएंगे बट टेस्ट खत्म नहीं होने वाले हैं. सो वी कैन से दैट अनलिमिटेड टेस्ट है. आफ्टर दैट सब्जेक्टिव टेस्ट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल एग्जाम्स. स्कूल में हम सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव लिखते हैं ना, तो सब्जेक्टिव टेस्ट भी हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्टिव टेस्ट में मिल जाएंगे. क्लियर? So we can say that one more is there, Swiflearn academic test series. Yes, SATs भी यहाँ पर है, SATs भी यहाँ पर है, so that all over India level में जितने भी क्या कराए जाते हैं, एग्जाम्स कराए जाते हैं, उसके भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे. So on the whole we can say that बहुत कुछ है. So you can go and book a trial. Okay, तो जाना कहीं नहीं है, just go to the description box or just go to the Google which is ज्ञान देवता also. तो www.swiflearn.com टाइप कर दीजिए और वहां से आप एक ट्रायल बुक करके देखिए कि जो जो मैम कह रही हैं क्या वो सही है. ठीक है, पढ़ाने के बारे में तो भाई सब कुछ सही है. ओके, और भी बाकी चीजें हैं, एवरीथिंग इज 100% ट्रू. ओके, so subscribe to our channel and those who are watching me right now just drop me a message. hello मैम, कैसे हैं? ज्यादा पढ़ लिया है आज, मुझे लग रहा है बच्चों ने, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है. ठीक है, सो स्टिल थोड़ा सा आज थ्योरी में थोड़े सा और कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी है, एक दो क्वेश्चंस है, तो आज हम वो भी देख लेते हैं. ओके, सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल. दोज हु आर न्यू हियर, प्रेस द बेल आइकन. यस बच्चों, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट. ओके, हिट द लाइक बटन, hit the like button, hit the like button. if आपको सेशन अच्छा लगा, कमेंट. यस, कमेंट. अगर आपको लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर सेशन चाहते हैं या पर्टिकुलर चैप्टर करना चाहते हैं तो प्लीज
ड्रॉप मी सजेशंस और इम्प्रूवमेंट, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, कुछ तो लिखो कमेंट में. ओके, एंड शेयर इट टू, यस, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. मैंने कल भी कहा था, अभी भी कहा था, शेयर कीजिए सो दैट अगर सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे तो हम ग्रुप स्टडी करेंगे और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं. ओके, क्लियर? So statistics 2, who all are online, just drop me a message. तो आज सेशन नंबर 2 होने वाला है, and what are going to be the objectives? Objectives are going to be the explain. We are going to explain ungrouped frequency distribution table और frequency distribution table. बहुत करते आए हैं, ये सब हमने बहुत अच्छे से किया है. Explain, we will be explaining what is class size and what is class width. After that, we will be explaining lower class limit and upper class limit. Okay, और we will also explain the group frequency distribution table. क्लियर? ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, क्लास साइज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं. क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंग्लिश, साइंस, मैथ्स तीनों में यूज होती है. यस, बहुत अच्छा वर्ड है ये फ्रीक्वेंसी. इंग्लिश में भी हम इसको यूज करते हैं, साइंस में भी हम फ्रीक्वेंसी, साउंड चैप्टर में सबने फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, राइट? ठीक है, लास्ट ईयर 9th क्लास में साउंड चैप्टर सबने पढ़ा है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ पढ़ा है आपने. क्लियर? तो वहां से भी फ्रीक्वेंसी आप रिलेट कर सकते हैं. इंग्लिश का भी वर्ड एक फ्रीक्वेंसी होता है, और मैथ्स में मैं आपको आज बताने वाली हूँ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. क्लियर? So frequency, it is a number which tell us how times a particular data appear in a given set of data. Okay, what is that basically? Basically it is a number जो हमें ये बताता है कि कोई particular data एक given set में कितनी बार आ रहा है. आप अपने फ्रेंड के घर एक दिन में कितनी बार जाते हैं, जो पड़ोस में रहता है? बार बार जाते हैं ना. अभी चलो मैथ्स की कॉपी दे दो, अभी चलो ठीक है साथ में क्वेश्चंस करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो कितनी बार जाते हैं आप? तो दैट्स बिकम द फ्रीक्वेंसी. आप कोई सी पर्टिकुलर वर्क को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, दैट्स बिकम द फ्रीक्वेंसी. ओके, सैम टीम्स हैज स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गेम्स द रीसेंट गेम. तो ठीक है, सैम की जो टीम है, ठीक है, दे हैव स्कोर्ड दीज गोल्स 2 3 1 2 1 3 2 3 4 5 4 2 3. ये इन्होंने क्या किए हैं? स्कोर किए हैं, गोल किए हैं. ओके, हाउ ऑफन 1 occurs? 1 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है. हाउ ऑफन 2 occurs? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है. क्लियर? सो द स्कोर्स ऑब्टेन इन अ 20 थ्रोज ऑफ अ डाइस. डाइस सबको पता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में अगर पता भी नहीं, पहले तो लूडो आप सब खेलते हैं. क्लियर? लूडो आप सब खेलते हैं, तो डाइस सबको पता है. स्टिल नहीं पता है तो देख लीजिए, अब वैसे भी आजकल तो बच्चे सारे डिजिटल हो गए हैं, तो वो मोबाइल में लूडो खेलना सीख गए हैं, है ना? है ना? तो 20 थ्रो किए गए. 5 4 3 2 1 1 2 5 4 6 6 3 2 1 4 3 2 2 4. ठीक है. यस कुमकुम, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ओके, सो 1 occurs 3 times. हाउ मेनी टाइम्स इज 1 कमिंग? 3 times. 2 is coming 5 times. 3 occurs 3 times. 4 occur 4 times and 5 occur 2 times. ठीक है, ये सब है. तो ये क्या है? 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, तो जितने टाइम्स, this becomes the frequency. कि कितने टाइम्स आ रहा है, this becomes the frequency. 1 is coming 3 times, so we can say that the frequency of 1 is 3. 3 is coming 3 times. 3 occurs 3 times, so we can. Adya Sharma, hello ma'am, hello Adya, how are you all? कैसे हैं आप सब? तो 3 occurs 3 times. 3 बार आ रहा है, तो भाई 3 बार आ रहा है, कितना अच्छा है ना. 4 बार आ रहा है, वाओ. एंड 5 occurs 2 times. 6 तो आया ही नहीं किसी का. क्यों? किसी को 6, किसी, अरे 6 तो आया ही नहीं. ओके, 6 नहीं आया तो दैट पर्टिकुलर गोटी खुलेगी कैसे? यस, खेलते हैं सब लूडो. ओके, सो वी कैन से दैट अ पर्टिकुलर नंबर विच इज कितनी बार आ रहा है, वो उसकी क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी बन जाएगी. 6 भी आ रहा है 3 टाइम्स, तभी तो मैं बोलूं बिना 6 के कैसे हम लूडो खेल सकते हैं. यस, सो 6 is coming 3 times. Clear? So this is what the frequency is, how many times a number is occurring. We can say that is frequency. Now frequency distribution. Frequency distribution, distribution मतलब जब हम distribute कर रहे हैं, ठीक है, in is a list, table और a graph. list भी हो सकती है, table भी हो सकता है, graph भी हो सकता है, that display the frequency of various outcome in a sample. Now what is sample basically? अगर मैं sample space की बात करूं, तो लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से सैंपल किया है. व्हाट इज द सैंपल? अभी हमने डाइस थ्रो किया ना, अभी हमने डाइस थ्रो किया, तो वो डाइस मैंने जितनी बार थ्रो किया, मेरा कितना आउटकम निकला, दैट्स बिकम्स द सैंपल. मेरा कितना आउटकम निकला एक पर्टिकुलर थ्रो करने में, दैट्स बिकम्स द सैंपल.
क्लियर है, सैंपल समझ में आया? ओके ना, each entry in the table contain the frequency or the count of the occurrence of the values with a particular group or that interval. अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, हेलो रेखा, यस हेलो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करूं तो एक नॉर्मल टेबल होगा जिसमें मैं ये बताऊंगी कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, दैट बिकम्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. So we can say that also a frequency distribution show that summarized grouping of data divided into mutually exclusive classes or the number of occurrence in the classes. ठीक है, सिंपल सी बात है. इट इज अ वे ऑफ शोइंग अनऑर्गेनाइज्ड डाटा. अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, अभी मैंने थ्रो लिखा 1 2 3 4 अनऑर्गेनाइज्ड है. टू शो रिजल्ट इन इलेक्शन इनकम ऑफ पीपल फॉर अ सर्टेन रीजन, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, स्टूडेंट लोन अमाउंट ऑफ ग्रेजुएट्स. तो इस सब के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड डाटा रहता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड फॉर दैट सिंपली वी यूज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी यूज कर सकते हैं, ग्राफ भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ व्हाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेटर. कल भी मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ मेन मोटो ही वही है. क्या है, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स? टू कलेक्ट द डाटा, डाटा को कलेक्ट करना, उसे इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना और लास्ट में प्रेजेंट करना. तो आज हम डाटा को प्रेजेंट करना सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं. क्लियर? रिपोर्ट कार्ड, कल मैंने आपको बहुत इजी बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था आपके रिपोर्ट कार्ड का. और प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड बहुत पुराना बोलते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, आपके सारे मार्क्स के डेटा को प्रेजेंट करते हैं. तो दैट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. क्लियर? दैट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. क्लियर है बच्चों? ठीक है. नाउ given below are the marks obtained by 20 student in maths out of 25. yes, out of 25 कितने मार्क्स आए? 21, 23, 19, 17, 20 स्टूडेंट्स के हैं. ठीक है, तो सिंपल है 1 2 3 4 5, ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. अब क्या करूं बच्चों, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में कि किसके कम आए किसके ज्यादा आए. ऐसे तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि 15 से नीचे कितनों के आए हैं, 20 to 25 के बीच में कितनों के आए हैं. आई कांट, मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा है, टाइम वेस्ट है अगर मैं इसको ऐसे देखूंगी. क्लियर? दिस इज वेरी गुड. आई कैन से दैट जो 12 मार्क्स थे वो एक बच्चे के आए हैं. इट मीन्स 15 मार्क्स दो बच्चों के आए हैं, 17 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 19 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं, 21 3 मार्क्स, 23 4 बच्चों के आए हैं, 25 2. आई कैन से दैट दो बच्चों ने फुल स्कोर किया है और एक बच्चे के हाफ से भी कम मार्क्स आए, हाफ से भी कम मार्क्स आए. तो दिस इज हाउ आई एम सीइंग दिस. ये प्रेजेंट किया मैंने, इससे इजी हो रहा है समझना. इससे इजी हो रहा है कि एक क्लास में कितने बच्चे एवरेज से बिलो हैं, कितने बच्चे एवरेज हैं, कितने अबव एवरेज हैं. ओके, बट व्हेन आई वाज हैविंग दिस when I was having this, just wait, yes, but when I was having this, it is not easier to interpret the data. Can I do that? No, I can't, because this is a unorganized way. ठीक है, सो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए व्हाट आई हैव डन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बनाई है. ठीक है, अब ये टेली मार्क कैसे लगाते हैं, आई डोंट थिंक ये बताने की जरूरत है क्लास 10th में. ठीक है, टेली मार्क. तो हम पहले मार्क्स ऑब्टेन. ओके, नाउ लेट्स सी. अब जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको मैं बता देती हूँ. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 12 मार्क्स आए हैं, फिर मैंने लिखा 15 मार्क्स आए हैं, फिर मैंने लिखा 17 मार्क्स आए हैं. ठीक है, मैंने सारे मार्क्स यहाँ पे लिख दिए कितने कितने मार्क्स आए हैं. अब मैं सबसे पहला देखूंगी 21, तो मैं 21 का जो मार्क है वो 21 के आगे जाके लगाऊंगी. क्लियर? 21 23 19. ओके, लेट मी राइट 21 23. ओके, लेट मी शो यू, जस्ट मैं 2-3 वर्ड्स का बता रही हूँ, 17 and 12. ठीक है, नाउ आई विल शो यू हाउ कैन वी डू दिस. ठीक है, नाउ 21 मार्क्स थे. क्लियर? तो 21 का जो लगेगा टेली मार्क वो कहाँ लगेगा, यहाँ इसके आगे लगेगा. क्लियर? उसके बाद 23 मार्क्स है तो उसका टेली मार्क यहाँ पे लगेगा. उसके बाद 19 मार्क्स है तो 19 का टेली मार्क यहाँ लगेगा. उसके बाद 17 मार्क्स है तो 17 का टेली मार्क यहाँ लगेगा. इसके बाद सपोज दोबारा 17 आए तो यहाँ लगेगा. उसके बाद दोबारा 21 आ गए तो टेली मार्क आप सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो व्हाई वी आर क्रॉसिंग, ये सबको पता है ताकि पता चले कि इस ग्रुप का नंबर क्या है, इस ग्रुप का नंबर 5 है. इट इज इजी टू कैलकुलेट हियर, नंबर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है.
अब बात तो वही हो जाएगी, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो अगेन मुझे वही तो काम करना पड़ेगा, गिनो बैठ के 1 2 3। तो मैंने क्या किया, एक सिंबल बना दिया 1 2 3 4 5, तो मुझे पता चल गया ये 5 का ग्रुप है और ये 6 7, तो मुझे दिख रहा है 5 + 2 6 7। क्लियर? दिस इज हाउ टेलीमार्क इज इम्पोर्टेंट। और जिसको टेलीमार्क बहुत डिटेल में समझना है, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, बट वी आर इन 10th क्लास, so we are not here to, okay, when the observation are large, it may not easy to find the frequency by simply counting, so we make use of bars like this called the telemark. Telemark show the number of time an object is repeating. Okay, it show us that how many time basically a object is repeating. 100 plants each were planted in 100 schools during the Van Mahotsav. Van Mahotsav कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ओके, वन महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाना ही अब आने वाले टाइम पे आप देखना लोग बस पेड़ ही लगाएंगे। वन महोत्सव विल बी द ओनली फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई पेड़ों की बहुत कमी हो रही है। यस, ये जो अभी टेम्परेचर इतना अप एंड डाउन चल रहा है ना, इट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ lack of trees. Okay, after 1 month the number of plants that survived were recorded as 95 67 28। तो कैसे करें इसको? कुछ नहीं करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। To present such a large amount of data to a reader can make sense of it easily। अब जिन्होंने कलेक्ट किया है वो तो ठीक है, लेकिन जब वो दूसरों को प्रेजेंट करेंगे तो इट शुड बी ना इजी वे, इट शुड बी ना इजी वे। ठीक है, तो हमने इनको ग्रुपिंग कर दिया। कैसे ग्रुपिंग कर दिया? 20 to 29, 30 to 39, 90 to 99। These grouping are called classes। These grouping are called classes or class intervals, and their size are called class size, which is 10 in this case। 10 है ना, 21 to 29 काउंट करो, 20 को भी काउंट करना है, तो 20 to 29 कितनी आ गई? 10। तो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट क्लास साइज। और क्लास इंटरवल हो गया 20 to 29। तो देयर इज अ इंटरवल एंड देयर इज अ साइज। देयर इज अ इंटरवल, कितने का इंटरवल है, और साइज कितने हैं, 10 है, तो दैट विल बी क्लास साइज। क्लियर? क्लियर है बच्चों? Okay, in each of these classes, the least number is called the lower class limit and greatest number is called the upper class limit। भाई lower class limit होगी और upper class limit होगी। तो ये जो 20 to 29 है, sorry, तो this will be the lower class and this will be upper class limit। लिमिट भी लगानी जरूरी है, लिमिट है, ऑन द होल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पर्टिकुलर हर उसकी बात हो रही है। 20 to 29 है, फिर 30 to 39 है, तो ये इसका ये लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा, इसका ये अपर क्लास लिमिट हो जाएगा, इसका लोअर क्लास लिमिट, इसका अपर क्लास लिमिट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नाउ दिस इज हाउ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने स्कूल्स में वो किया गया। 20 टू नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव, 20 to 29 3 स्कूल्स में, 30 to 39 14 स्कूल्स में। तो दिस इज हाउ दिस बिकम इजी, this becomes easy to interpret the data in this way। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कुछ पता चल रहा था, मैं कुछ बता सकती थी, यहाँ से तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ही पता नहीं चल रही है, ये तो सिर्फ डेटा है। कैसा डेटा है? रॉ। कल बताया था, दिस इज नथिंग बट द रॉ डेटा। अभी इसको प्रेजेंट किया गया, पहले इसको इंटरप्रेट किया गया, एनालाइज किया गया, फिर इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया। वाओ, दिस इज समथिंग नाइस। इससे मुझे सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली पता चल रही है। So this is how we use statistics in presenting from the raw data to the representation। Clear है? ठीक है? Presenting data in this form simplifies and condenses data and enable us to observe certain important features at a glance। Clear? This is called the group frequency distribution table। Clear? Group frequency distribution table बता रहा है, इस तरीके से प्रेजेंट करने में डाटा हमें बहुत अच्छे से फीचर्स पता चलते हैं कि क्या हुआ है। So here we can easily observe that 50% or more plants survived in, yes, 50% or more plant survive हुए हैं। Can you see? यहाँ पे 12, यहाँ पे 23, 18। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्लांट जो सर्वाइव किए गए हैं वो यहाँ पर किए गए। क्लियर है? ओके, क्लियर? So now let us understand this। Hi, I'm Lucy, and in this video we're going to look at frequency tables. These numbers are enough to cause someone a headache, and there's only 200 of them. Lots of datasets have thousands or even millions of pieces of data.
so we need to collect and record the data in tables to make it manageable. Thankfully, we can group this data into a nice neat table like this, which we could then easily put into a bar chart. Sometimes the data can be left as individual numbers, and sometimes it's easier to group it, like I grouped the exam results. So we have these ages. We can collect them into a frequency table by tallying. 16, 19, 20, 22, 19, and carrying on for all the data. Then add up your tally marks to get the frequency. And we have a completed frequency table, which is much easier to work from. I could have just as easily chosen to group the numbers into categories, for example. When creating grouped frequency tables, if possible, it's best to try and make the groups the same size. So let's go back to our exam results. These groups are different sizes. This one is 10, these are 14, and this one is 30. Let's try and make them more equal. We know the lowest mark was 22% and the highest mark was 100%. So the range of results is 78%. Now, because we have A star, A, B, C, D and E, so 6 groups, work out approximately how big each group should be by dividing the range by 6. We want each group to be about 13% in size. Starting from the bottom at 22, add 13 is 35, so the next group starts at 35. Adding 13 each time, and then fill in the rest of the group at the end. We now have 6 groups that are pretty much the same class width. Here are some questions for you to do. Pause the video, work them out, and click play when you're ready. How did you get on? One final question for you to do. Create 4 equal groups or classes for this data. Pause the video, work it out, and click play when you're ready. Did you get the groups right? So that's the end of frequency tables. They're very useful for collecting data together to make it much easier to handle. We can then calculate averages or draw different graphs from them, like histograms, which we'll look at in another video. If you liked the video, okay, so we can say that the blood group of, okay, I hope the video was very interesting actually, and she was all the saying that how can we use a frequency distribution table when we have a lot of raw data. Okay, after that the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follow: A, B, O, A, B. सबको पता है 4 blood groups होते हैं A, B, O, A, B. ठीक है, positive, negative are also there. Okay, so represent this data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group. तो बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा blood group 8th class में बच्चों में से सबसे ज्यादा blood group किसका है और सबसे rarest क्या है, means the most common and the rarest. Okay, clear? ठीक है, तो दिखा सकते हैं यहाँ पे A, B, C, A, B, O और A, B. We have just write the blood groups here. Yes, to all who are watching, if you are getting all the concept, just write yes ma'am, thumbs up me, कुछ तो दिखाओ. Okay, और boring चल रहा है मैम, देख तो रहे हैं बट ठीक है, not a problem at all. A, B, O, तो A हम देख सकते हैं the 9 students are having blood group O. ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ से आपको just pick करना है A. तो A के आप क्या करेंगे, A के लिए आप A के आगे tally mark लगा देंगे. ठीक है, okay, what you will do that you will just put a tally mark again. अगर B आ गया तो B के आगे tally mark लगा देंगे, A भी आ गया A के आगे लगा देंगे, फिर अगेन A आ गया तो एक बार एक. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, tally mark कर सकते हैं. क्लियर? सपोज 1, फिर 2, फिर 3, फिर when it is repeating 5, then just cut it like this. Okay, clear? After that, yes, now all are जग गए हैं सारे. Okay, so yes ma'am, okay, very clear. So here we can say that the frequency is 9, B
Frequency is 6 for the O. Frequency is 12 for the AB blood group. The frequency is 3. So can you tell me which is the rarest and which is the most common? Yes, my lovely students. Which is the rarest and which is the common? Yes. Okay. Adya is there. Movies Mania also is there. Yes. So can you tell me which is the rarest? Which blood group is rarest and which is the most common? As we can see here from the frequency, frequency से साफ साफ दिख रहा है कि जो सबसे कम है that will be the rarest और जो सबसे ज़्यादा है that is the most common. Okay, so the rarest is कौन सा हो जाएगा rarest? It will be AB. Okay, and O, yes, O will be the most common. Okay, O positive and O negative. O positive are most common, O negative are rare. Okay, ये तो आप सबको पता होगा. Yes, as usual. Yes. So the most common is O and the rarest is AB. Okay, now the type of frequency distribution. Inclusive and exclusive. Very simple. Inclusive and exclusive. Now let's see that inclusive method. Under this method, the class are formed in such a manner that the upper limit of a class interval does not repeat itself as the lower limit of the next class interval. समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ. 0 to 9 है. ठीक है, ये इंक्लूसिव मेथड है. इसमें 0 to 9, 0 से वैल्यू 9 तक जाएगी. नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास मार्क हम लेंगे वो 10 to 19 लेंगे. व्हाट दैट मीन? दैट मीन इसमें जो 9 है वो इंक्लूड हो रहा है, क्लियर? तो ये इंक्लूसिव मेथड हो जाएगा. नेक्स्ट में 10 वाले में वी विल नॉट टेक द 9, हम 9 की वैल्यू नहीं लेंगे. क्लियर? क्लास मार्क्स आप लोगों ने इससे पहले बहुत बार बनाया है. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द इंक्लूसिव मेथड. Clear? Example 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15. So we can say that if I'm having a value 5, तो 5 वाली वैल्यू इसके अंदर जाएगी. And if I'm having a value 10, तो जो 10 वाली वैल्यू होगी वो इसके अंदर जाएगी. Clear? So that is called inclusive method. We are including the upper limit and lower limit also. Clear? After that, we have exclusive method. Now the method is used for those series in which the upper class limit of one class become the lower class limit of the next class. Upper class limit देख लेते हैं. Can you see here? 0 to 5 था. अब ये जो 5 इसका अपर क्लास था, इसका क्या बन गया? लोअर क्लास बन गया. सिंपल. Okay. After that, the 10 was lower. Sorry, the 10 was upper. This has become the lower for the another class. So this will be like the 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20. So as you can see that, as you can see here, it is repeating here. ये repeat हो रहा है, ये repeat हो रहा है. So this is called the exclusive method. It means that if I will be having a value 5, this will come under this. इस वाले वैल्यू के अंदर सिर्फ हमारे पास 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा. जब भी 5 आएगा, we will take that to the next group. Clear? That is called the exclusive method. Now class interval and class limits. The presentation of the data expressed into groups. Inclusive we take for histogram, ma'am. Yes? Yes, it is. Very good. The presentation of the data expressed into group. These groups are called classes or the class interval. Clear? The presentation of the data expressed into group. Group में कराए जाते हैं. These groups are called classes or the class intervals. Each class interval is bounded by two figures called the class limit. हम already discuss कर चुके हैं. The lower value of that is called the lower limit. Upper value is called the upper limit. Clear? So हम कह सकते हैं कि each class interval has a lower and a upper limit. Clear? When we talk about class size, the difference between true upper limit and the true lower limit of a class interval is called the class size. Simple. If I'm having a class interval from 10 to 20, okay, so what that will be? 20 minus 10, this will become the class size. As I already told you, जहाँ पे हमारे पास 29 to 30 का जो ग्रुप आया था वहाँ पे मैंने आपको already बताया था. Clear? Now let's move. Class mark. Yes, mid value. Okay, mid value. Okay, ma'am. Okay, someone is asking, ma'am, what is your blood group? Okay, inclusive. Okay, okay. My blood group. Okay, I will tell you in the last. Okay. Mid value of each class interval is also called its class mark. Mid value. तो mid value क्या हो जाएगी बच्चों? देखो, half of upper limit plus lower limit. Suppose I'm having 10 to 20 class interval है, इसका मुझे mid value निकालना है. तो 10 plus 20 divided by 2, that is 50.
क्लियर? तो ये हम क्लास मार्क आगे यूज करने वाले हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना जहाँ पे हम ये सारे कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो आज सिर्फ कंसेप्ट है, अभी हम इन सबको क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड द क्लास मार्क. Now adjustment factor, the difference between the upper limit and the lower limit of the next class. Divide the difference by 2. The value so obtained is known as the adjustment factor. अभी adjustment factor क्या होता है देख लेते हैं. Suppose हमारे पास है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40. ठीक है, ये क्या है? इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. ये कैसा नहीं है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है. मतलब कैसा है? अभी हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो अभी हम अगर इसको, इस वाली वैल्यू को अगर हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से हम 0.5 पीछे गए और यहाँ से हम 10.5 आगे आए. तो हमने सिंपली क्या किया? व्हाट वी हैव डन, okay, just what we have done, we have just subtract the value here and add the value here, subtract the value here and add the value here. Clear? Okay, the class limits obtained after the adjustment is called the actual class limit. एडजस्टमेंट किया ना हमने, ये रेगुलर नहीं था, 1 to 10 था और 11 to 20 था, हमें इंक्लूसिव चाहिए था, दिस वाज एक्सक्लूसिव. इंक्लूसिव करने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट सबट्रैक्टेड here and added here 0.5. क्लियर? ठीक है. So the range, now what is range basically? What is range? The difference between the maximum value and the minimum value is called the range. Clear? Maximum value and consider the case where the maximum value is 24 and the minimum value is 0. So we can say that the range will be 24 minus 0, that will be 24. Clear? So range आपको याद रखना है highest value minus the lowest value. Clear? जैसे suppose आपके marks आए हैं, अगर 12 आए हैं out of 20, मैं बोलूँ 18 आए हैं, 15 भी आए थे, 17 भी आए थे, तो this was the highest and this was the lowest. So the difference between those will be the range. Okay, सब concepts आप पहले पढ़ के आए हैं. ठीक है. Now according to the data collector, summer on Uranus lasts for 21 years. Oh my god, summers, यहाँ तो वन ही बस 3-4 month में ही हालत खराब हो जाती है. Okay, जो यूरेनस इज हैविंग समर्स फॉर 21 years. So डेटा कलेक्ट किया गया है, ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, डेटा कलेक्ट करा जाता है. Okay, can we do this by adding any number and subtracting the same number? Yeah, that will be 0.5. Okay, that will be 0.5. Okay, as you can see here, the difference between the upper limit and the lower limit of the next class, divide the difference by 2. ओके, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हम क्या कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे एंड वी विल डिवाइड द डिफरेंस बाय 2 एंड दैट विल बिकम द एडजस्टमेंट फैक्टर. दैट विल बिकम द बेसिकली एडजस्टमेंट फैक्टर. ओके, अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. कैन वी सी हियर, यहाँ पे 10 था, वी वर हैविंग 10 हियर एंड वी वर 11 हियर. ओके, सो 11 minus 10 is 1 and we have divided by 2, that becomes 0.5. Okay, I forget to calculate that. Okay, so that is 0.5. So we can say that here we will subtract 0.5 and here we will add 0.5. Clear? Similarly, we will subtract here, for the lower limit it will be subtracted and for the upper limit it will be added. So nothing but higher limit of upper class, जो ये वाली क्लास है, इसकी हायर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल डिवाइडेड बाय 2, that will become the adjusting factor. For that we are making an exclusive to the inclusive. Clear? This is how we can convert the table. Okay, clear? Is it clear? Okay, yes. Okay, range I have already discussed. Okay, so according, we have discussed also what we have learned today. Yes, we have learned about the ungrouped frequency distribution table or the frequency distribution table. After that we have told you what about the class size and the class width. Okay, class size kitna hota hai, just upper limit minus lower limit. Okay, now we have also explained the lower class limit and the upper class limit. Okay, Nishan Chauhan. Okay, hello everyone. Yes, hello. Okay, and we have also discussed about the frequency distribution table. Okay, that was clear actually. Okay, so what is the extra time question? The height of the, this is for the homework. Okay, I'm not taking this, let's take this for homework. The height of 50 students measured to be the nearest centimeter have found to be as follows. ठीक है, 161 है, 162 है, 150, as you can see here.
ठीक है, represent the data given by a group frequency distribution table by taking the class interval 160 to 165, 165 to 70. तो clear? अब कैसे बना देंगे? तो just look at the values. 170 के बाद what we have values? We have 172 also. तो हम 175 तक जाएंगे, right? After that, तो आप group distribution table बना लीजिए 160 to 165. ठीक है? Next बना लीजिए 160. Now tell me 160 to 165, is this inclusive or exclusive? 165 to 170. Now after that 170 to 175. So can you tell me who all are online, that is this a inclusive or the exclusive? Inclusive frequency, inclusive class mark or exclusive class marks? Just tell me that. Okay. So we can say that 170, I can't see any number greater than 175. Okay, can you see? 171, okay, no. So we can say that. So where 161 will be in first group. हम इधर को कर लेते हैं. 150 is also there. 150 is also there. तो एक हमें इससे भी कम का बनाना पड़ेगा. हमें बनाना पड़ेगा 150 to 155 and 155 to 160. Clear? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, and you will, yes, that will be inclusive, very good, and you will, what you will do, you will just put the tally mark. ठीक है? Why I am not doing the tally marks? Because we are doing this tally mark from the class 6, I can say. Okay, 6 क्लास से हम टेली मार्क करते आए हैं, तो सिंपल, यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यू. 165 कौन से टेबल में आएगा? इसमें आएगा, जस्ट पुट अ टेली मार्क देयर. 158 किस में आएगा? 158 will come to be this, so I will put again a tally mark there. So you need to put the corresponding tally marks, and if there will be 5, अगर 4 के बाद 5 आ गया, just put a like this, so there will be, you can say, 5 values. Okay, where what can you conclude about their heights from the table? So you need to make a table. ओके, एंड आफ्टर दैट आपको उसमें बताना है कि 50 स्टूडेंट्स की हाइट में सबसे ज्यादा हाइट कितने बनेगी. क्लियर? कौन सी रेंज में इट फॉल्स. ओके, क्लियर है? दिस इज हाउ इट हैज डन. So more than 50% students are shorter than 165. Yes, as we can see here 50% ये आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा. Only we can say that 165, 10 plus 15, only 15 students are there. बाकी ये जो students है इन सबकी हाइट क्या है? 165 से क्या है? शॉर्टर है. क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है. क्लियर? ओके, so this was it. So a big thank you to all who were there. Okay, so those who are new here, as I can say, Nishant Chauhan is there, and I can say lots of students who were there new. Just subscribe to our channel and press the bell icon also, so that you will never miss any update. And those who are new, it is basically a platform where we are providing online classes, and right now we are taking online classes on YouTube. Okay, and that is from 6 to 10. क्लियर? 6 से लेकर 10 तक के यहाँ पे सारी क्लासेस, बेसिकली मैथ्स एंड साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चलती है. सो यू कैन बी देयर फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग. Okay, yes, good evening, Tanuja. Sorry for the late, बच्चे, but you are so late. I have just ended up the session, so you can just go back और इसको देख लीजिए. Okay, so we have done only the telemark concept and the frequency distribution table, or we can say the inclusive and the exclusive one. How can we make them regular? Okay, clear? So it's time to go. Okay, so goodbye. अच्छे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूज मैं लास्ट में कहती हूँ, ठीक है? एंड यस, do the practice, because this is the only thing which will make you perfect in the mathematics. Clear? So, and last I can say that happy Holi to all my dear lovely students who are watching right now, और जो बाद में देखेंगे सबको happy Holi. Okay.